गए? 4 गलत किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए तुमसे? सिली मिस्टेक था। हाँ, तो ये देखो, ये जो है ना, अब मतलब एक वो क्वेश्चन जो छोड़ा वही तुमको नहीं आता था, यस सर। है ना? और वो भी नहीं किस सर, वो टॉपिक से भी था? आता था सर, टाइम थोड़ा मेरे से मिसमैनेज हो गया था। हाँ, तो ये ना बेटा, ये देख, यही सब अपन को इम्प्रूव करना है। अभी अभी तो एक बार सिलेबस होने दो, फिर इसके बाद जब अपन यस टेस्ट और सर। लिखेंगे ना, सी द मोर यू विल राइट टेस्ट द मोर यू विल इम्प्रूव। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स टुडे। Still recording. See, we are doing properties of matters, and in properties of matter we will be learning about properties of solids. ठीक है, see, I am not teaching you about chemical bonding because you already do bonding in chemistry, और वो तो पूरा एक चैप्टर पढ़ाते हैं बॉन्डिंग में, तो मेरे को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो properties of solids we'll be doing, and let's start with this topic. It's a very simple topic. This chapter is mostly formula based chapter. Okay, तो फॉर्मूला पता है और थोड़ा भी उसका एप्लीकेशन आता है तो यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड इन दिस चैप्टर। ठीक है, and believe me, there is at least 1 to 2 questions asked in every exam from this particular chapter, because there are so many things to ask, right? So we are starting with stress and strain. We are starting with stress and strain. अब देखो, strain is a cause and stress is a cause and strain is the effect. So when does stress happens? आप लोगों को स्ट्रेस कब होता है? अनन्या, श्लेषा, कृषा, शीरजा? So due to pressure, like constant pressure. हाँ, मतलब जब भी आप लोगों को अपने नेचर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो आपको स्ट्रेस होगा। यस और नो? Yes sir. भाई, अगर आपको अच्छा लगता है सुबह तक सोना, तो कोई आपको सुबह उठा नहीं रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, आराम से सोते रहो। जैसे ही किसी ने उठाया, तुम्हारा दिमाग त्योरियां चढ़ जाएंगी तुम्हारी, है कि नहीं? ऐसे आंख ऐसे हो जाएगी, है कि नहीं? तो स्ट्रेस तभी आता है जब हमको आ, हमारे नेचर के अगेंस्ट काम करवाया जाए, राइट? बहुत सिंपल सा फंडा है ये। तो सॉलिड्स में भी स्ट्रेस तभी आएगा जब आप उसको, वो रखा हुआ है सॉलिड कहीं और आप उसको खींचने की, या उसको खींच रहे हो आप। ठीक है, खींच रहे हो मतलब अगर एक साइड से खींचने लगे तो उसमें कोई स्ट्रेस आएगा क्या? ये पेन ऐसे रखा था, मैं इसको इधर से पुल करने लगा, कोई स्ट्रेस फील करोगे क्या? तुम नहीं फील करोगे। No. इसको दोनों साइड से पुल करोगे, देन यू विल एक्सपीरियंस द स्ट्रेस, राइट? तो देयर शुड ऑलवेज बी एन अपोजिशन टू योर एक्ट on that particular solid or matter piece. Understood or not? तभी Yes. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्यों यहाँ पर स्ट्रेस कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो, स्ट्रेस सबसे पहले तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? तो longitudinal stress is of two types. First is tensile stress when we are pulling the object, and the second one is compressive stress. ठीक, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक रॉड है। As the name suggests, tensile में we are actually pulling this object outside, और compressive में we are trying to push it inwards. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जब तक कोई फोर्स, ये नेट फोर्स 0 होगा, वी आर पुलिंग इट फ्रॉम बोथ द साइड्स बाय इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस। अगर फोर्स इक्वल नहीं होगा, देन देयर विल बी एक्सीलरेशन एंड देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस इन इट।
अंडरस्टूड? जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो फोर्स, उसको कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी देयर विल बी अ स्ट्रेस, राइट? नाउ A is cross section area, so longitudinal stress is given as force per unit area, right? And remember, this force is perpendicular to cross sectional area. Understood? Say yes or no. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Now Yes. because of this, if the length of the original length is L, and because of this, well, there will be a strain. इसको हम बोलते हैं longitudinal strain, and this strain is equal to change in length upon length. ये change in length upon length is given as strain, right? This is called as longitudinal strain. Then there comes Hooke's law. Hooke's law क्या बोलता है? Hooke's law बोलता है the ratio of stress to strain for any particular object is always constant till some point. ठीक है, is constant till some point. एक कुछ दूरी तक, जब तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तब तक वो कांस्टेंट होता है. So that constant in this case is longitudinal strain upon longitudinal stress. This is called as Young's modulus. इसका क्या नाम है? इसका नाम है Young's modulus. शिव, तेरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 15 तारीख हो गई ना अपनी शायद? नहीं, 15 नहीं, कब तक नहीं। बोला था मैंने तेरे को? 12 दिसंबर। ओके, ठीक है, अपन बात करेंगे आज, रुकना है क्लास के बाद. ओके। तो if I put the values here, this is force per unit area, change in length upon length, right? So this is Young's modulus. I hope all of you understood it. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now let's take one example here. Now I have this wire, okay? And on this wire, I am exerting a force 5F here, 3F here, and 2F here. See, on this side, this is 5F. At this cross section, I am exerting a force 3F, and here I am exerting a force 2F. So you can see here that both the sides, the net force is, overall the net force is 0, right? So there will be a stress, but the point of application of the forces are different, okay? This length is 2L by 3, and this length is L by 3. Now cross section area is A. It says find the change in length, net change in length of this wire. So this is what we intend to find, okay? Now see how you will approach this question. So it's simple. Take this 2L by 3 portion and take this L by 3 portion differently. ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? इधर फोर्स लगाया तुमने 5F, यहाँ फोर्स लगाया तुमने 5F, इधर फोर्स लगाया तुमने 2F, और यहाँ फोर्स लगाया तुमने 2F. So this point is common. ये वाला पॉइंट है, ठीक है? तो this is 5F, this is 2F, this is 2F, and this is 5F. Now you can see here that at this point, what is the net force acting here? You can see here 5F minus 2F is 3F only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is change in length on first part of the wire is how much? It will be F, which is 5F. Length is how much? It's 2L by 3. Cross section area is A, and Y is Young's modulus. Delta L2 is how much? It's 2F into L by 3 into AY, right? So net change in length is how much? This is 10 FL upon 3 AY
plus 3FL upon 3AY. Sorry, 2FL upon 3AY. So this is 4FL upon AY. I hope all of you understood it. Yes, sir. शिव समझ आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? Yes, sir. कृषा, श्लेषा, Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. शीरजा, Yes, sir. ठीक है, कॉपी करो इसको जल्दी से. Just let me know when you are done, okay? Done, sir. चलो आगे चलते हैं, ठीक है. So this was all about longitudinal stress. Now comes the next point, which is shear stress and strain. देखो इसमें we are considering that the object is getting deformed, but we are not considering any compression happening here. Okay. So this is a cube, okay? Cube or cuboid, whatever. Now, the bottommost point of this cube or cuboid is fixed. So fixed ko we'll show it like this. So this portion is fixed. ठीक है? अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, ये एक टेंजेंशियल, इसके एक कंपोनेंट हो गया टेंजेंशियल, एक हो गया ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द एरिया, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड. ठीक है? So this was the net force acting, and this is the tangential force, and this is the normal force. The distance between the topmost and the bottommost layer is, say, h, right? I am not considering the normal force is compressing the topmost portion. We are not considering that as of now, right? But now what happens here is, because of this tangential force, the topmost portion gets shifted by some
length x. ठीक है, नहीं ये यहां नहीं आएगा, this will not come here, this will go to this place, और ये ऐसा दिखाई देगा, and this will be like this. ये नहीं आएगा, हाँ, this will not be here, and ये ऐसा हो जाएगा. I hope all of you understood it. Say yes or no. Yes, sir. Yes. Yes, So sir. ये देखो यहाँ पे जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना टॉप मोस्ट लेयर का, say this displacement is x, right, and the angle by which the angular displacement is theta, right? So here if I talk about shear stress, right, this is equal to tangential force per unit area. And what about shear strain? It is tan of theta, that is what, x upon h. आया बच्चों समझ में? और फिर आता है यहाँ पे shear modulus. Following the Hooke's law, shear moduli will come. Shear modulus, this is given as sigma, नहीं, not sigma. This is given as eta, and this is the shear stress upon the shear strain. So eta is equal to this, right? तो अब यहाँ पे क्या है ये? यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पर? We call this as moduli of rigidity also. I hope all of you understood it. Yes, sir. Sir. Now comes the next part, which is volume stress and strain. ठीक है. Now remember, volume stress will come only in case of change in pressure. Appears only when pressure changes. Okay, it appears only when pressure changes. अब इसमें क्या है? तो देखो कभी भी ध्यान रखो, whenever you have an object, right, then if you want to see a change in volume, you apply some kind of force here, right? And this force brings in change in pressure. Now remember, this force is the force which is normal to this area, right? So change in pressure is what? It's force per unit area. And this is what? This is volume stress. बेटा समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया सर. देखो पहले से अगर बलून कोई फुला के रखा हुआ है, तुमने बलून इन्फ्लेट किया हुआ है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसको जस्ट हैंड में हाथ में आपने रखा हुआ है, is there any change in volume? No. Change in volume will happen only when you will try to press that balloon. Yes or no? And that is where the volume stress comes in. Okay. Now, volume strain is what? तो volume strain जो होगा वो होगा यहाँ पर change in volume per unit volume. And following Hooke's law, the moduli will be bulk modulus. ठीक है, capital B, and this is given as force per unit area, change in volume upon volume, और with a minus sign. एक मिनट, हाँ इसको यहाँ पर
this is equal to minus sign. Why minus? Because change in volume will always be negative. Understood or not? Compress कर रहे हो ना बाहर से, तो change in volume क्या होगा? Final volume minus initial volume, and that is what is negative. Okay, so that is why we put negative sign in front of that expression. I hope it's clear to all of you. Please say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Shirja Chari, Yes, sir. understood or not? Yes, sir. Understood. करो, लिखो इसको बेटा जल्दी से फटाफट सब लोग. And once you are done, just let me know. Sir, बोलो. so delta V is negative because the volume decreases, right? Obviously, yes. Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Chalo. Now let's discuss Poisson ratio. Poisson's ratio. ये क्या है? This gives us the ratio of lateral strain to longitudinal strain, right? Now see here. If this is the wire, okay, and we are applying some kind of force here to stretch this wire. ठीक है? ये किया हमने. ठीक. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है.
The initial diameter was what? Initial diameter is d. Final diameter is small d. ठीक है, ये है, इसको ले लो. This is d plus delta d, where delta d will be negative of course, and this is d, right? And the length is how much? Initial length is L and the final length is L plus delta L. देखो हमेशा याद रखो, कन्वेंशनली चेंज को हम प्लस डेल्टा ही लिखेंगे. नाउ दैट डेल्टा विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अपने आप उसकी वैल्यू आएगी वहां पर. अंडरस्टूड? तो पॉइसन रेशियो इज गिवन एज ट्रांसवर्स स्ट्रेन. ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या हो गया बेटा? चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर divided by change in length upon length. Understood? Hello. Yes, sir. This cannot be Yes, greater sir. than 0.5. ठीक है, cannot लिख लो यहाँ पर. ठीक है, it is always less than 0.5. लिखिए इसको, उसके बाद एनर्जी स्टोर देखेंगे. Yes, sir. डन. Done, sir. चलो Yes, अब sir. हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी of a stretched wire. ठीक है, see how to derive it. देखो बहुत simple derivations हैं, and these derivations are usually asked in your exams, right? In 12th 11th standard exams. और इसके applications जो हैं वो पूछे जाते हैं तुम्हारे in exams like, अगर derivation based explanations हैं, मतलब theory type के रहेगा तो फिर तुमको उसमें पूछेगा किसमें, advanced में. तो यहाँ पे we are stretching it by applying some kind of force and it is stretched by this length. मान लो, ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे लगा. एंड दिस चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, और डेल्टा एल की जगह इसको ना स्मॉल एल लिख लो. एंड ओवरऑल टोटल लेंथ इज हाउ मच? टोटल जो ओरिजिनल लेंथ था दैट वाज कैपिटल एल. ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स एंड स्ट्रेचिंग इट, राइट? So let's assume that you have stretched it up to some distance x. ठीक है, you have stretched it up to some distance, say x. तो इसको ना तुम यहाँ पे ऐसे शो कर दो. ठीक है, इतना पोर्शन स्ट्रेच कर चुके हो तुम ऑलरेडी इसको. तो यहाँ पे द फोर्स इज F. And now you have F as what? Y A x upon L. Yes or no? बच्चों बोलो हाँ या ना Yes, फटाफट. sir. अब ये क्या बोल रहा है ना कि this is this a variable force or a constant force?
वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कृषा, अनु, is this force a variable force or a constant force? अनु, अनन्या, कृषा, शीरजा, Sir, शिव. this is a variable force. It's a variable force because F is dependent on X, right? It's a function of X. That is why it's a dependent force. Sorry, it's a variable force, right? Now, how to find work done by a variable force? We find work done for a small displacement, and in this case, the displacement is what? In this case, the displacement is, this is the displacement, right? Yes, sir. And let's say this displacement is dx. So this is dw. And since there is no change in kinetic energy and there is no non-conservative force acting here, whatever is the work done by the external force will be the change in potential energy. I hope I am clear. Yes, sir. Kids, please say yes or no, hai na? So that I'll understand. Anu, Ananya. Understood, sir. Yes, sir. Yes, sir. So from here it is 0 to u, and from here it is x is changing from 0 to L, right? This is 0 to W. Now what is F? F is YAX dx over L, right? When you integrate it from 0 to L, you get the elastic potential energy. So this is U is equal to YA L square by 2L. Okay. Now what you do here is, see, you can write this U as half of stress into strain into volume. Okay. Now what is stress? Stress is force per unit area. What is strain? Strain is change in length upon length. And what is volume? A into L. Right. Yes, sir. Sir. नहीं, इसमें कुछ झोल है. X is YAX upon L, X square by 2, 0 to L, it's L square. So now there is no L square here, na? Give me a second, huh? Change in length is changing from 0 to L only. Yes, correct hai ye. So this is AL. Acha. Got it. See, Young's modulus is equal to stress upon strain. ये है ना बेटा? So what is stress? Stress is Y into strain. Okay. Yes. So that is what? Y into L over L. तो ये जो F है ना यहाँ पर, replace it by Y into L over L. Now you understood? Now you can see here that this, if you cancel this L, this matches with this equation. Yes or no? Yes, sir. Understood, sir. Hmm? Yes, sir. So this is what you should remember. देखो कभी कभी ऐसा होता है, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैं गायब हो गया था यहाँ पे. मतलब I was just trying to figure out कि हो क्या रहा है. So it happens with everybody, है ना? So तुम लोग तो अभी सीख रहे हो, तो इसलिए be very precise about it. So now see, this is what? This is volume. Okay. So if I divide potential energy by volume, what I get here is energy density. This is what? This is energy density. Energy per unit volume.
and this is equal to what? Half of stress into strain. I hope you understood it. Yes, sir. Girja, you understood this derivation or not? Yes, sir. है ना? That this is there in NCERT syllabus, so please be very sure about it. Huh? Copy it, and then we will solve some problems on this. Copy it, sir. All of you done? Anu, you understood it or not? Krisha, Anu, Ananya, Shlesha, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, certain. okay? शीरजा हो गया बेटा? Yes, sir. चल, तो अब देखो, let's do one problem. This is another example. Now, extensions in the wire can be because of various things, right? First was we are applying an external force, right? Now, suppose here this is a wire, area of cross section is A, length is L, and weight is M, mass is M. So because of its own weight also it can stretch, right? So let's try to find out what is the actual extension in this wire because of its own weight. Okay. So let's say this was the initial portion of the wire, and from here we are trying to, it has extended because of its own weight by this much portion. ठीक है? तो let's see what is happening here. आप लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है? तो लेट्स टेक अ पोर्शन ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टॉप, ठीक है? या बॉटम से x डिस्टेंस ले लो इसको, कहीं से भी जा सकते हो. लेट्स टेक दिस लेंथ एज x. ऑल ऑफ यू विल एग्री टू दिस कि यहाँ पर mass is uniformly distributed, which we are assuming, right? So whatever is the extension in the upper portion of the wire, that is on this portion, it is because of the weight of this overhanging portion, yes or no? Yes, sir. Yes. So here let's say that यहाँ पर जो force लग रहा है that is F, and this force is M
GX over L. Yes or no? बच्चों Yes. हाँ, अब ये कहता है कि सपोज करो, now we are seeing this much portion of the wire, right? This is capital L minus X. Now, what will be the extension because of this force in a very small portion? That small portion is, we are assuming this small portion to be this much portion. In this dx portion of the wire, the change in length is dl, right? And that will be how much? It will be force, which is mgx upon L, right? This L is capital L, huh? Force per unit area, Young's modulus, dl, this is delta L ऊपर गया, यहाँ पे रहेगा बेटा dx. ये आएगा या नहीं आएगा? देखो ये कहाँ से आया? I'll tell you this. Y is what? Force per unit area, change in length upon length. Yes or no? Yes, sir. So change in length can be written as force length upon y into area. So I Yes. have written this force per unit area तो तुमको समझ में आया. Y is the Young's modulus and ये जो L है यहाँ पर, the length is dx. What we are doing is we are seeking a change in the value of, in the change in length of dx element. Yes or no? Yes. DL is Yes. the change in length, is the change in length of dx portion, right? So now we have DL as mgx dx upon LAY. Now you integrate it. This is from 0 to L and x is varying from 0 to capital L. So L is equal to mg L square upon 2 LAY. And this is mgl upon 2 AY. This is length L. लिखो इसको. Kids, you are understanding or not? Anu, Ananya, Yes, sir. Krisha, Shirja, Lakshit, Shiv Understood, Kalyan, sir. Shetty, Yes, sir. Yes. Desha. Yes, sir. Okay. Okay. तुम लोग को ये वीडियो बंद करने की बीमारी है क्या? शिव, तो मेरी आजकल भी सॉल्व हो गई। मैंने तुम्हारा वो मतलब कब सुधरेगा? तो इस मैंने अभी मोबाइल डाटा पे भैया को बोल दिया, फिर मैं अगली अच्छा क्लास से अच्छा, वीडियो ठीक है, अपलोड। ठीक ठीक. समझ आ रहा है ना? ये देखो, ये बहुत आसान चैप्टर है. दिस इज अ वेरी 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 इजी चैप्टर. ओके, नाउ व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इज just go to concepts of physics HC Verma. ठीक है? First 15 questions is what you can solve. Okay? And based on solids, we have completed solids today. Based on this chapter, just a second, ना, एक मिनट रुको जरा, मैं तुमको बताता ही हूँ जरा.
ये पढ़ लो इसको यहाँ, तो ये ऑल यू हैव टू रीड ऑल दीज, है ना। अच्छा, ये जो ये यहाँ पर एक देखो, एक आएगा ये वाला, दिस ग्राफ, शीरजा, you practice this graph, okay? Yes, sir. This is at least for 2 to 3 marks they will ask. ठीक है? Naming all the points, what is permanent Yes, set, sir. what is plastic behavior, all this you need to learn, okay? Yes, sir. Then we have done this elastic potential energy also. We have completed it, determining Young's modulus in the library. So till here you guys can do, okay? Now don't do this. ये we haven't studied it. We'll do it in the next session. अब यहाँ पे देखो. Here you can solve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bas. Okay. So 10 questions from solids are there. And then go to this objective 1 and 2 and do how many you can, any number you can, do as many as you can. And in exercises, you have to do it from 1st to 15. ठीक है? Yes, sir. Please do it. तो ये this is very simple chapter, very simple. Shiv, don't wait. Yes. इसको बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करना, छोटा है, छोटे में ही मार देना है इसको, Yes. ठीक है? Yes. तो प्लीज इसको करो जाके, ओके? अनु, यू ऑल्सो डू द होमवर्क, ओके? Yes, sir. Shirja, you complete it because it's in your syllabus also, okay? And Yes, I sir. hope your syllabus is now completed. Yes, sir. It's completed. तो करो इसको, and let's meet on Tuesday then. Tuesday we will be doing numericals, ठीक है, based on this chapter. हाँ? Fluids पे पूरा फ्लूइड्स का डाउट भी ले लो, डाउट्स और इसका डाउट सब कर लो उस दिन, न्यूमेरिकल्स करवा लो मुझसे, डाउट पूछ लो उस दिन फ्लूइड्स के सारे, Yes. ठीक है? ट्यूसडे को, ओके? Okay. श्लेषा को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्लेषा, एनी इम्प्रूवमेंट और नॉट? कुछ ठीक हो रहा है Yes, कि sir. नहीं? हाँ ठीक हो रहा है ना? हाँ, बस ठीक होना जरूरी है. कृषा, आज तुमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तुम्हारा, क्यों भाई? क्या? तबीयत खराब है थोड़ी. अच्छा, तबीयत खराब है. ये तुम लोग की तबीयत, अच्छा सर्दियों में खराब हो रही होगी ना तबीयत? ऐसे यहाँ पे हाँ बहुत हाँ, ज्यादा मैं खराब है. समझ गया. देखो, गोवा में ठंड नहीं है, मुंबई में ठंड नहीं है. श्लेषा, तुम्हारे यहाँ भी ठंड नहीं है क्या? सर है थोड़ी थोड़ी. थोड़ी. और लक्षित, इन चेन्नई, यू आर फ्रॉम चेन्नई और वेयर, विच प्लेस? Coimbatore, sir. Coimbatore. There is no temperature is normal, It's too cool, sir. too cold, but Yeah. you are not wearing anything. My room is like that, sir. ठीक है, तो we will be meeting on Sunday को मिलेंगे. एक तो हम लोग कल मिल रहे हैं 8:15 to 9:15 for our 11th standard numerical solving sessions. ठीक है, Yes. चलो, bye, take care. Thank you. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir.